Hello everyone, Fahad Zafar here from VOC. आज की video is about Indian CEOs, so let's take a look. So this is a post from Alia Fatma, and she says that CEO of Google, Microsoft, Adobe, Twitter, like they're all Indian. This is a little bit old news. India is taking over and they're not even making noise about it. So this post is like, I think she's just trying to talk about, a country has excelled so much, that's like right next to us. But I can tell you these people 100% deserve it, in my opinion. I have time to flex a little bit. So when I worked in Silicon Valley, when I worked at Google and when I worked at Amazon, like I've worked with these people, and I will tell you that these people are super motivated. They are very intelligent, and they do not stop. Like when they achieve something, they just jump to the next one. I can tell you, okay, my roommate was Indian, so when we both were interning at Google, so he would just go out and start finding, other startups in the valley. कि यार ये startup अच्छी है, इनका event कब हो रहा है. So he would come and tell me कि यार that company Quora एक company है जो कि ना they're holding like an intern event, तो आओ उधर चलते हैं. वो यार एक और company है, इसका नाम Coursera है, तो आओ उधर जाके चलते हैं, तो check करते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वो ना. तो there like he was doing all this stuff while excelling at his internship. So I would say like when I was like young and in my prime, I thought I was motivated, but when I looked at like him and like like a bunch of other Indian folks, like they were like, I would say 5x more motivated than I was. So and then like they're very goal driven. So जैसे अगर वो internship कर भी रहा है ना, तो he will be preparing for like interviews for the next round. कि यार मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी तो कल को फिर मैं वापस चला जाऊँगा सेमेस्टर पढ़ने, और जब सेमेस्टर ख़त्म होगा तो फिर मुझे किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट. तो क्योंकि उस टाइम मुझे इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, like थिंकिंग सो फार अहेड. तो दैट वाज लाइक माई फर्स्ट एक्सपीरियंस meeting these people, and like I was very impressed. I got to learn a lot from these folks. Like they taught me like they were actually very good at networking too. So even not just with Indians, with like other folks. So they would go and talk about like they had really good communication skills, and they would like go and talk to like the boss's boss, and just hang out, have a conversation about like even if it's random stuff like alcohol or whatever, or even food or technology. So these people are like, they're really good at what they do, and I'm not surprised. अभी तो ये कुछ भी नहीं है. अभी आप देखें अगले 5 साल में क्या होता है, right? Because India is about to hit that peak of growth. तो either they will go exponentially या फिर extremist or fascism की वजह से it'll flatten out. Like let's see what happens. So let's read some comments. Paul says they deserve it and are very hardworking. I worked for 1 year in UAE, and the Indians I worked with are more loyal, professional, and caring than the Pakistani community. They took care of their own, helped them, lifted them up. Our guys were busy planning which next jugaad to implement by gaming the UAE system in order to make more money illegally. It was such a shame, but we have brought this on ourselves. So this part is true. Like Pakistani people generally are always looking for like a shortcut. I don't understand. Like I remember when I bought a house, हमारा जो घास काटने वाला था ना, the first time he came, he is a Pakistani. So he comes and he says, like you can claim this insurance on your title if you go and tell them this happened. And I'm like, no, but like everything else is fine. He's like, no, but you can fake it. Like just think about it, right? Like that blew my mind कि एक बंदे से मैंने आज तक कभी मिला भी नहीं है. पहली दफ़ा like interaction हुआ है कि यार you provide a service, can you cut this grass and I will pay you. लेकिन he is just offering advice on how to cheat the system. Like it's just insane. Anyway, so I do also want to say कि ये देखें ना, पाकिस्तान का और इंडिया का comparison, to be honest, like बनता नहीं है इस तरह जिस तरह लोग बनाते हैं. Like Pakistanis are very used to this. Okay, in the 90s or 80s, like we used to be really, really good. So that's why we were ahead of them. But the universe takes its course, and if you really, like a philosophical discussion, like in the universe is all about probabilities, right? So if India is 8x or 10x bigger than us, they produce 8x or 10x more smart people, right? So they have 8x, 10x more chance of succeeding. So there's also another book called Outliers. उसकी YouTube पे पूरी उसकी ना वॉइस रीड आउट है, आप वो सुन ले बैठ के. 6.5 घंटे की मेरे ख्याल से है वीडियो.
उसमें भी वो कहता है कि यू जस्ट नीड टू बी गुड इनफ, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रेपरेशन, तो फिर यू विल एक्सेल. तो दीज पीपल आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग एंड देन वंस दे हिट द अपॉर्चुनिटी दे एक्सेल. पाकिस्तान लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है जी. हमारे यहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत पढ़े लिखे बड़े अक्लमंद लोग हैं, बट वी डू नॉट वैल्यू दैम, वी डू नॉट पुट दैम ऑन द पेडिस्टल के अगली नस्ल को दिखाएं कि यार ये आपका नोबेल प्राइज़ विनर है, ट्राई टू बी लाइक दिस पर्सन. नहीं यार, बस वो एक बॉल फेंक दो जिससे एक बंदा आउट हो जाए तो देन दैट इज़ लाइक द हीरो ऑफ पाकिस्तान फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, यू नो, लाइक इट्स. तो हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत मेस्ड अप हैं. बट एनीवेज, लाइक दिस कंपैरिजन इज़ नॉट like India and Pakistan is not a one-to-one comparison, to be honest. Like we have done so much worse क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए हैं. तो like it's just, I don't think there is like making this comparison is just like it's like apples to oranges, to be honest. Okay, so Adil Mania says all of this is only possible when your youth is highly educated, especially in sciences. But as of now, our youth is only motivated towards leaving education and opening up business. भाई बिजनेस खोलो, but at least get good quality education, especially in IT sectors these days, which have a high exponential growth chances. देखिए, अपने बिजनेस खोलने में कोई मसला नहीं है. सेकेंडली, अगर आपको कुछ एजुकेशन हासिल करनी है तो टू बी ऑनेस्ट, लाइक इट्स मच बेटर टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब, राइट, और लाइक फ्रॉम लाइक AWS की सर्टिफिकेशन कर लें, कोर्सेरा से कोई ना क्यूरेटेड कोर्स करें, और ट्राई टू डू समथिंग आफ्टर यू फिनिश, लाइक बिल्ड समथिंग एंड पुट इट ऑन GitHub सो इट्स देयर फॉर एवर. अब नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जी जो पाकिस्तानी स्कैमर्स हैं जो ये कोर्सेज बेच रहे हैं उनके पास चले जाएं, बट स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ अ रियली गुड थिंग. लाइक व्हेन यू डू दैट यू विल लर्न, लाइक यू नो, कि लाइसेंसेस कैसे हैं, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट, एक बिज़नेस के एक्सपेंसेस और वो उसकी टैक्सेशन कैसे रिपोर्ट करते हैं, हाउ डू यू हैंडल यू नो, हाउ डू यू talk to distributors, how do you get inventory, how do you like build a product, how do you sell it, marketing कैसे होती है, आपकी growth projections के. तो it's a very good skill to have to understand the entire cycle of, you know, raw material to making money pretty much, right. तो पूरा जो आपका business है वो सारा यही है. तो I would say I slightly disagree कि education हासिल करें, लेकिन that's on you, right. Like it's your own duty to go get educated on the things you like now you have, you know, like infinite resources, to be honest. तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये I would say कि ये नहीं है कि जी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, बट यू नो फाइंड द बेस्ट एक्सेलिंग पर्सन फॉर लाइक यूनिटी, उसका 50 वीडियोज़ का कोर्स है, वो जाके पढ़ें, उसके बाद कोई लाइक इवन इफ इट्स अ बैड गेम, लाइक मेक अ गेम और समथिंग, राइट. एक बंदे की जावास्क्रिप्ट के 25 कोर्सेज हैं, वो सारे पढ़ के फिर एक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाएं, जाके पढ़ें SEO क्या होती है. Alright, let's keep going. So Ali Zadi says, while it is true some of these corporate companies have Indian CEOs, but having said that, one cannot ignore a large number of Pakistanis also working for these companies in various positions, more power to the subcontinent. Yeah, Pakistanis are also doing really good, but Indians are doing better, and I will also say that, you know, 100% they make the effort, but the government also supports them. So a little bit of story time. So I had an Indian roommate, you know, like he used to tell me कि यार हमारे पास खाने को पैसे नहीं होते थे, भाई की फीस नहीं होती थी and stuff. तो I was like, dude, how are you paying for your fees then? At I think he was in Cornell, right? तो Ivy League school की आप फीस कैसे दे रहे हैं जब आप इतने गरीब हैं? क्योंकि my initial understanding was कि all these Indians coming to the US, they're like the elite, like the richest people, and they're smartest kids that are coming here, right? But I was actually blown away to find out that their government provides, like they can go to a bank and say मेरा admission हो गया है, मुझे पैसे चाहिए फीस के, तो the bank gives them the fees and then they start paying back after they graduate. So the country, you know, like as a whole is investing in its own people. So that's why it's kind of working out. So it's a bunch of factors कि वो खुद भी बहुत अच्छे हैं, अक्लमंद हैं, एफर्ट करते हैं, the country is also pushing them upwards, और फिर उसके बाद उनकी स्टैंडिंग्स भी अच्छी हैं. जैसे हमारे मुल्क की आप देख लें कि लाइक यू नो लाइक कि हमारे मुल्क का इमेज क्या है, उनके मुल्क का इमेज क्या है, तो यू नो पीपल लाइक आर obliged to like working with them, you know, like dealing with them and stuff. Alright, so Javeria A. Hussain says, because they don't have Maulvis like us who are fixated on women's clothing only. That's so true. Rather than teaching people about the ahadith, ilm hasil karna har Musliman par farz hai, and other related ahadith to ilm. We have joint family systems where mothers are busy all day in house chores and pleasing in-laws rather than focusing on talim and tarbiyat of their children. So this part is 100% true. Like Pakistan is a nation that's obsessed with religion. Like हर चीज़ में religion घुसा देना किसी तरह,
और यही एटीट्यूड कि जी इस दुनिया में तो कुछ होना नहीं है, अगली दुनिया में देखेंगे जाके, तो वाई वुड यू लाइक मेक एन एफर्ट. तो वेरी स्केपिस्ट, डिफीटेस्ट एटीट्यूड के जी इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरा, द बिगर पॉइंट दैट आई थिंक शी इज़ मेकिंग इज़ वेमेन एम्पावरमेंट. लाइक इट्स जस्ट सो हार्ड फॉर वेमेन इन पाकिस्तान. लाइक अगर वो नौकरी करें भी तो लाइक जस्ट गेटिंग देयर, कमिंग बैक, लाइक हमारे ये बेसिक मसले ही नहीं सॉल्व हुए. तो दिस एक्चुअली लीड्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. तो ये आई वाज लुकिंग एट दिस एक्चुअली टुडे. तो ये देखें कैलिफोर्निया का जीडीपी, सो दिस 5K एसेंशली इज़ 5 ट्रिलियन. तो कैलिफोर्नियाज जीडीपी इज़ अबाउट टू overshoot Germany's GDP. तो California, a state, is generating more, is has a high GDP eventually than Germany. तो ये किस लिए होता है? देखें, सब कैलिफोर्निया सबको पता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स के लिए मशहूर है, राइट? तो ऑल दैट स्टफ इज़ पेइंग ऑफ. लोग ऐसे ऐसे तरीक़ों से पैसे कमाएंगे एंड दे विल ग्रो एंड बेटर द सोसाइटी, जो कि आप सोच भी नहीं सकते. फिर आप उन पर टैक्स लगाएं, जो करना है करें. लेकिन दिस इज़ लाइक लिटरली लाइक अनदर प्रूफ के once you let individual freedoms flow through society, they will pay back in spades. तो एक स्टेट का जीडीपी देख लें पूरे मुल्क से ज़्यादा है. और ऑब्वियसली पाकिस्तान तो लाइक 300 बिलियन पे कहीं है, तो इट्स नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग इट. Alright, so let's just take a few more. Alif I says, sorry. Their leaders are not as corrupt as ours. They are more focused on education and learning new skills. Whereas in Pakistan, wealthy people bribe to get places both in education centers and professional fields, while poor people have no resources and help from the government to fulfill their dreams. So a little bit we touched on this. एक और बात ये आप सुन सकते हैं, बाकी एक आध और पॉडकास्ट में भी मैंने सुनी कि ना पाकिस्तानी रिच पीपल दे डू नॉट हेल्प द कंट्री, दे जस्ट साइफन द मनी आउट. लेकिन बाहर के जो अमीर लोग हैं ना, जैसे आप देखें अमेरिका में लाइक जेफ बेजोस, राइट? या ही इज़ अ बिलियनियर बट ही डिड समथिंग टू इम्प्रूव लाइक लाइव्स ऑफ अबाउट 100 मिलियन पीपल. ठीक है, वो लोग ऑर्डर करते हैं, चीज़ों के घर पे आ जाती हैं, दे लव इट एंड दे पे हिम मनी. आप देख लें ये बिल गेट्स, लाइक हमारे मुल्क में जितनी विंडोज़ चल रही हैं उस बेचारे को उसके पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ही इज़ हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट on our lives, even though like when we were young we never paid money and licenses for these software, right? तो उसने कुछ किया है and then they're rich. Like पाकिस्तान में the rich people, it's messed up, right? एक बंदे ने शुगर मिल खोल ली, उसने once he owns it he makes sure कि और कोई लाइसेंस ही ना ले सके. तो एक बहुत ही करप्ट तरीके से पैसे बनाना और फिर साइफन आउट करके बाहर भी, ये नहीं कि कोई बिजनेस वगैरह चलाने, बस 4-5 फ्रेंचाइजें ले ली, ये पॉपाइज वगैरह, मैकडॉनल्ड्स वगैरह की, और वही एक बिल्डिंग ख़रीद के दे जस्ट रेंटिंग इट आउट. तो द एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तानी एलीट इज़ जस्ट, आई मीन इट्स जस्ट बैड फॉर द कंट्री ओवरऑल, राइट? तो जनरली जब आप, करप्शन हर मुल्क में होती है, यानी कि पीपल्स के मनी और सारा कुछ होता है, लेकिन इवेंचुअली 5-10% सोसाइटी में वापस वो लोग जब डालते हैं तो इट वर्क्स आउट. वो एक कंपनी जो है वो इट एक्सपैंड्स फ्रॉम लाइक वन बिजनेस टू अनदर. वो कोई जूते बनाएगा, फिर वही कंपनी गाड़ी बनाएगी, फिर वही कंपनी कुछ और बनाएगी. तो दे लाइक व्हाट दे डू इज़ दे ईदर एक्सपैंड विद इन डिफरेंट स्टेट्स, और एक ही मुल्क में अपना सारा पैसा रखते हैं, तो इट काइंड ऑफ वर्क्स आउट फॉर देम. Let's take the last one. So Durya Saad says Indians are so much competitive and hardworking, and yes, very sharp. So if they're taking over, then it's well deserved. Also, they have been superpowers too. Good terms with West. ABD, their Bollywood is everywhere, so accept it. Yeah, तो वही ना, उनका global image अच्छा है. और like let's just be happy कि there is some place in this world where people who are good and hardworking can actually excel at something. So you take it as a motivation, and you should be really like thinking about like what is the next step, how you can get to the top, right? So very very interesting post. Thanks for the post, Alia, and thanks for watching VOC. This is Fahad, and bye bye.